ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Surya Narayana, the symbol of energy, vitality, and prana, the very essence of life. Install him at your Bhrumadhya, offer pranam to him, and take the sankalpa of increased creativity, improved capabilities, higher wisdom, and a better discrimination. With this sankalpa, we shall chant the Gayatri Mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Ma Durga. She is Durgati Nashini. She is Kala Vinashini. She is Uma.
She is Rama. She is Brahmani. She is Shakti manifest. Invite her and install her in your heart center. Offer pranam to her and take the sankalpa of removal of difficulties, distresses, hardships, and despairs, and to replace them with hope, enthusiasm, energy, focus, dedication, hard work, perseverance, and contentment. With this sankalpa, we shall chant the Durga Dvatrinchan Namamala 3 times altogether. Om Durga Durgartishamani Durga Padvinivarini Durgamachedini Durga Sadhini Durga Nashini Durgato Dharini Durga Nihantri Durga Mapaha Durga Madnyanada Durga Daityalokadavanala Durgama Loka Durgamatma Swarupini Durgamarga Prada दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ओम दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ओम दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम 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 keeping your eyes closed. Experience the manifestation of the sankalpas we have taken. Hari Om Tat Sat. Next, let us get ready for the chanting of
the Shri Ramcharitmanas. Invite and install the entire Shri Ramar Darbar in your heart center. Prabhu Shri Ram, Devi Maa Janaki, Lakshman ji, Bharat ji, Shatrugna ji, Pavan Putra Hanuman Dev. Give them places of honor so that they can sit and enjoy the divine stories of the Lord. Next, let us invite Goswami Tulsidas ji so that he may bless us with the divine stories of the Lord. Today, we shall chant the Ayodhya Kand, Doha 233 to 236, pausing at the 20th Mass Parayan Vishram. To begin, let us first invite Hanumanji and give him a place of honor, because wherever Katha of Sri Ram takes place, Hanumanji is sure and certain to arrive. राम कथा के रसिक तुम बुद्धिरासि मति धीर आइए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर विहारी सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनि धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा लखन राम सिंह सुनि सुर बानी अति सुख लहे उन जाई बखानी यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाय सरित समीप राखी सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा चले भरत जहाँ सिंह रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई समुझि मातु कर तब सकुचाही करत कुतरक कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि मम नाउ उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊ मातु मते महु मानि मोहि जो कछु करहि सो थोर अघ अवगुण क्षमि आदरहि समुझि अपनी ओर जौ परिहरहि मलिन मन जानी जौ सनमानहि सेवक मानी मोरे सरन राम ही कीपनहि राम सुस्वामी दोसु सब जनहि जग जस भाजन चातक मीना नेम पेम निज निपुन नबीना असमन गुणत चले मग जाता सकुच स्नेह शिथिल सब गाता फेरत मनहु मातु कृत खोरी चलत भगति बल धीरज धोरी जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ तब पथ परत उताइल पाऊ भरत दसा तेहि अवसर कैसी जल प्रवाह जल अलिगति जैसी देखि भरत कर सोचु सनेहु भानिषाद तेहि समय बिदेहु।
लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटिहि सोचु हो इहि हरषु, पुनि परिणाम विषादु। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाइने अराने, भरत दीख बन शैल समाजु, मुदित चुदित जनु पाई सुनाजु, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाहि सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी, राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव बिरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराउ, रामचरण आश्रित चित चाउ। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। वन प्रदेश मुनि पास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे, जय सिया राम जय जय सिया राम। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना, जय सिया राम जय जय सिया राम। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा, जय सिया राम जय जय सिया राम। बयरु बिहाई चरहि एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा, जय सिया राम जय जय सिया राम। झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निशान विविधि विधि बाजहि, जय सिया राम जय जय सिया राम। चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजु माराल मुदित मन, जय सिया राम जय जय सिया राम। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। बेल बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बार बार बरमागहूँ, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम स्तुति। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्, पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि, नामि जनक सुतावरम्, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम्, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु,
उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खलदलगञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम् नवकञ्ज लोचन कञ्ज मुखकर कञ्ज पद कञ्जारुणम् श्रीराम. Keeping your eyes closed. The moment of reckoning is near. Bharatji has travelled so far with the conviction that he will meet Sri Ram, take his refuge, surrender to him, and request him, plead with him to come back to Ayodhya and take up the kingdom which is his by right, by quality, by nature. But as the moment of reckoning draws closer, his heart is filled with so many thoughts, auspicious and inauspicious. What to do, what not to do. On the other hand, Lakshmanji was getting ready to blast Bharatji out for daring to even raise an eyebrow against Sri Ram. But divinity indicated that, my dear, your brother Bharat is pure of heart. Be careful. He is the holder of Dharma. If it were not for him, who else is there in this whole wide world who could take up his position following all the rules? There is none. Listening to this divine indication, all the three, Sri Ram, Ma Janaki, Lakshmanji, they are pleased that yes, Bharat is pure. Bharat has risen above all the petty and mundane things. And they are waiting for him to come. The entire retinue with Bharat, that army of devotees, they reach Mandakini. And he asks them, please wait here. Let me first go and find out. He, his brother Shatrughna, and his friend Nishadaraj, three of them, they take a dip in Mandakini and move forward. As it always happens, Bharatji's mind is full of thoughts, turmoil. Will Sri Ram consider me
to be an accomplice of my mother's doing? Will he recognize me? Will he forgive me? What will he do? I know not. And the more he thought, the harder it was becoming. He said, no matter what he does, I will do what I am supposed to do. I will go and surrender myself at his feet. Beyond that, whatever he does is his. Look out. And three of them started moving ahead. And suddenly, amazing moments started appearing. Nishadraj, who always stayed in the forest, had a clear idea of what these omens were, and he quickly started looking it up, analyzing, observing it. And he said, there's sorrow, there's going to be great joy, but again, there is going to be sorrow. Well, I don't know what's happening, but there's going to be joy. That's a good thing. Come on, let's go ahead. And as they drew closer, they could feel a different energy over there. The place where the Lord resides, that becomes Amaravati. That becomes Vaikuntha. That becomes the center of the universe. That becomes Ayodhya. And Bharatji could feel the entire expanse filled with divine energy. And all living, non-living creatures being under the sway of Sri Ram, ready to do anything and everything at his behest, for his behest. As they were going ahead, Nishadaraj spots the grove and he says, oh, 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 look, 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 look. That's the place. That's the place. That is where Sri Ram resides. The anticipation of Milan with Sri Ram, it has reached its peak. Bharat is extremely eager to have his darshan. And it is at such a moment that we pause on the 20th pause of the Mass Parayan for some time. Remain immersed with Bharatji. Purity, humility, bhakti, maryada, all rolled into one. Let us take their blessings as the dignitaries get ready to make a move. Let us offer them pranam. कथा विसर्जन होता है
सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हों, तहाँ तहाँ कर उपयान। बाजा बाजत गृह गए, भरद्वाज के द्वार। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। Having sanctified ourselves with the divine story of Hiram, let us now move ahead with our Navratri Anushthan. Bring to your mind the presence of Ma, and with innocence, purity, and a complete lack of shrewdness, cunningness, all these worldly qualities, just the desire to connect with Ma. Visualize her, the cosmic creatrix, the cosmic mother. And we are like a baby in her lap. In this journey, we are now moving ahead, transitioning from first stage to the second. Today is that transition period. Let us deepen our connect with Ma. And for this, we shall begin with the Saundarya Lahari. Those of you who are able to should sit in Vajrasan. Bring your hands in Avahaniya Mudra. Meditate on the form of Ma. Today we shall chant from verse 34 to 44. We will begin and end with the Samput Mantra, verse 25. We shall conclude with Namaste, Namaste, the Prarthana. And to begin, we shall chant the Bija Mantras. Om Aim, Om Hrim, Om Shrim, Om Krim. त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषित्
ययमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारम् हरमहिषि भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्थम् तपनशशिकोटिद्युतिधरम् परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्ध स्फटिकविशदं व्योमजनकम् शिवं सेवे देवीमपि शिवसमानव्यसनिनीम् ययो कान्त्या यान्त्या शशिशिशिरकिरणसारूप्य सरणीम् विधूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलसंवेद कमलमकरन्दैकरसिकम् भजेऽहं सद्वन्द्वं किमपि महतां मानसचरम् यदालापादष्टा दशगुणितविद्या परिणति यदा दत्ते दोषात् गुणमखिलमध्यपय इव तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय निरतम् तमीडे संवर्तम् जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिले दयार्द्राया दृष्टि शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्या तिमिरपरिवृत्ते स्फुरणया स्फुरन्नानारत्ना भरणपरिणद्धेन्द्रधनुषम् तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणम् निषेवे वर्षन्तं हरमिहिरतप्तं त्रिभुवनम् तवाधारे मूले सहसमययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां यज्ञे जनकजननीमज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तिमीयति ते सनीडे यच्छाया चूरणशबलं चन्द्रशकलं धनुःशौनासीरं किमिदमिति बध्नाति धिषणाम् धुनोतोध्वान्तं न स्तुलितदिलतेन्दीवरवनं घनं स्निग्धं श्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन्मन्ये बलमथ न वाटी विटपिनाम् वहन्ति सिन्दूरं
प्रबलकबरी भारतिमिर द्विषां वृन्दैर्वन्दी कृतमिव नवीनार्ककिरणम् तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोत सरणिरिव सीमन्तसरणी त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य offer pranam at the feet of Ma Tripurambika. Offer pranam at the feet of Bhagavad Pad, Adi Guru, Bhagwan Bhashyakar, Acharya Shankar. Feel their grace showering upon us. Now, let us move ahead to worship the Trigunatmika form of Devi. We shall begin with the Siddha Kunjika Stotra. Shiva Uvacha Shrunu Devi Pravakshami Kunjika Stotramuttamam Yena Mantra Prabhavena Chandi Japa Shubho Bhavet न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनम् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वायोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च
निशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ढीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीं वां वीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्बनादिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॐ इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्. Now meditate on the form of the Trigunatmika Swarupa of Ma, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Meditate on each of the forms as I chant the individual Dhyana mantra. Mahakali Dhyanam. ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्भशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौच्छयिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् ॐ श्री महालक्ष्मी ध्यानम् ॐ अक्षस्रग् परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैप्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सुरौजो भवाम् ॐ श्री महासरस्वती ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं हरिद्रा कुङ्कुमं च कल्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः ॐ हं आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः ॐ यं वायव्यात्मकं धूपं कल्पयामि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः
ॐ रं अग्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। ॐ त्वम् अमृतात्मकम् अमृतमय महानैवेद्यं कल्पयामि। श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो नमः। ॐ सं सर्वात्मकं सर्वोपचारपूजां संकल्पयामि नमः। Having meditated on these three forms of Devi, we shall now connect with her with the Saptashloki Durga, the 7 verses of Durga Saptashati picked up to connect us to her. शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनम् मया तवैव स्नेहेन आप्यं वास्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुपादीनि छन्दांसि श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं रोगानशेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं ॐ दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा। For a few moments, remain immersed in the divine form of Ma, like the baby keeps gazing at its mother in adoration. And as the child gazes upon the mother, its heart spills and overflows with love, indescribable love. Only that which a child can feel for its mother. And let us now sing the glories of Ma with a heart full of love, joy, and happiness.
नमो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय। अटल छत्र की जय, साके दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। Keeping your eyes closed. Experience the form of Ma. Kalika Swarupini, Mahakali. She is Kali the terrible, 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 terrible to those who are full of negativities, because she destroys the negativities. Just as a surgeon destroys, removes, clears off all that which is necrosed, dirty, unhealthy, harmful. In the same way, she destroys the negativities. But to the innocent and to the devotees, she is the most loving, kind Ma. Feel her presence within us. Experience her grace, removing all the negativities, all that which is not useful, all that which is causing us harm. She is destroying it all.
Deepen your communion with Ma and allow her to clear the debris away. Observe your negativities. They are the Rakshasas which she is killing off one after the other. Experience the kavacham, the shield created around you, protecting you, nourishing, nurturing you, allowing the blossom of divinity to rise. Feel the grace of Ma. And then slowly maintaining awareness upon her grace, the kavacham formed around us, the purification taking place within us. Slowly start externalizing your awareness. Become aware of the body, become aware of the posture, become aware of the contact points between body and the floor, body and the chair, body and the backrest or the wall, body and the clothes, body and the breeze, body and the breath. Become aware of sounds and smells around you. With your eyes closed, become aware of all the objects around you. Become aware of the external situations and circumstances. Allow this grace, the energy of Ma, to spill over, radiate out around you, creating an energy field around you. Experience the kavacham protecting you and maintaining your awareness on both of these. We shall now chant Om and Shanti Pat. Inhale deeply. Om. Om.
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हैंड्स इन प्रणाम मुद्रा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरिः ओम हरि ओम तत्सत Gently rub your palms against each other. Place them on the closed eyes. Experience the warmth radiating from your palms to your eyes. And then, when comfortable, gently move your palms away. Open your eyes. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Jai Ho. नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। Namo Narayan. नमो नारायण Namo स्वामी जी। Narayan. Namo Narayan ji. नमो नारायण स्वामी जी। Namo Narayan ji. नमो नारायण स्वामी जी। Namo Narayan. नारायण So, स्वामी जी। Namo Narayan. So, you see, today is the completion of the first triangle, first triad, sorry, the Mahakali Swarup, the Tamasic Swarup, that is now being transformed into the Rajasic. The transition from Tamas to Rajas is beginning. Yesterday we tried to observe how Tamas can also be useful. If you don't sleep, you will not be happy. You have to be very careful and alert and aware. General feeling is, oh, Tamas is very bad, Rajas is hopeless, I just want Sattva. But if we are not ready for it, Sattva will send us to the loony bin because we won't be able to handle it. So therefore, it is essential to observe each of this. Of course, eventually we have to transcend Tamas, transcend Rajas, transcend Sattva also, and go into the Trigunatit form. God knows how many lifetimes it is going to take us. Doesn't matter. The point is, we have to make a beginning. And when we make a beginning, we have to make use of each and everything. And we have to realize the utility of every object. Tamas also plays a role. If Tamas were not there, if the structure were not there, life would be a very problematic place. Just imagine
Just imagine that you are walking on the road and suddenly you start feeling sad. Why? Because somebody beyond on that side is feeling sad and everything comes straight in on you. And then as you walk ahead, suddenly you start feeling very happy and you start feeling angry and this, that, the other. What is going to happen? How are you going to function? You need to draw a line around yourself. Then you can take a path. But if this separation becomes too hard and rigid, then we become cold and unemotional. Then we become procrastinating. Then there is no aim left in life. Then hurting others becomes joyful for us. Those are the negative aspects. And we have prayed to Ma to get rid of those negative aspects. The good of tamas should remain. And that slowly transforms into the rajasic aspect also. We have rajasic qualities within us. And rajas is not bad. How else would you think you can fend for yourself, get food for yourself? When the lion or tiger is coming to attack you, if you don't climb up the tree, how are you going to save yourself? The instincts which are there are for a purpose. But when they go beyond a purpose, then they start becoming harmful. They start becoming obstacles instead of helping us. Just imagine, you see a tiger, you feel the fear, you know it's not an option that you can fight the tiger. So you fly, you run, you climb up the tree or do whatever. But now, every time something clicks, oh my God, it's a tiger, and you go into a panic attack. Is it going to be helpful? It is this negative aspects which we have to get rid of. That gives us a goal, a direction, and allows us to move further and further and further in life. I feel we should not worry too much about having the darshan of the Lord, being one with the Lord. That is way far for us. It is like I am in kindergarten and I am worrying about my post-doctoral thesis. Oh, what thesis should I take? It's not going to help me anyway. It is going to help you if you first pass your kindergarten tests, learn what you need to learn. And as you learn along the way, what you need to do when you reach that point will become clear. You did not have to, none of us had to really work hard to grow. It happened naturally and spontaneously. From a baby, we became an infant, a toddler, a child, a teenager, a youth, adult, and so on and so forth. Happens naturally. Same way, growth can take place naturally. What we have to try to do is we have to try and become wiser, become more intelligent, learn from the things. Many times we forget to learn from things and we remain in our own bubble. That is what we have to get rid of. And today, as we move from the first triad to the second, tamasic aspect to the rajasic, it is worthwhile to ponder upon these aspects of life. What is tamas? What is rajas? That which is giving me a structure, giving me a shape, giving me an identity is tamas. But then that
which limits me only to this, and therefore I try to gain at the cost of others, that is also the negative connotation. When there I have lots of desires, but those desires are working at the cost of others, again that is desires but not beneficial. So without getting judgmental, we need to analyze and understand this and present it to Ma, that this is how I am thinking. Now please correct me and show me the path how to progress and evolve. So let that be our assignment for today as we disperse today at the end of the tamas aspect, moving into the rajasic aspect. And to welcome the rajasic aspect tomorrow, we will be having, tomorrow being Friday, the chanting of the Lalita Sahasranam Stotram in place of the Ramcharitmanas. So, with this, let us conclude. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Jai Ho. Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan. Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan Swamiji.